Ji, Assalamu alaikum. We're starting this new episode of our essay discussion forum meeting, weekly meeting on one of the topics for CSS essay. Our this week's topic is, has the United Nations organization succeeded in averting war in the world? Has UN succeeded? क्योंकि बड़ी हद तक ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर राय बहुत ज्यादा स्प्लिट है। बाद लोग ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो काफी हद तक सक्सेसफुल है, ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई। ओके, और क्या ख्याल है वो जो छोटी छोटी जंगें जो बेशुमार हुई हैं, वर्ल्ड वॉर छोटी तो है नहीं, कोई भी जंग छोटी नहीं होती। जो लोग उस जंग में शामिल होते हैं उनसे पूछें, नो वॉर इज अ स्मॉल वॉर। सो और दूसरी तरफ देखा जाता है कि दुनिया में वॉर्स होती रही हैं मुसलसल एवर सिंस 1945। So this is a topic which has split opinion, and in such a topic, of course, the best method for discussing this type of topic is the argumentative essay. I hope this will help you in learning the method of argumentation as well. यहाँ एक बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है ऐसे डिस्कशन फोरम में, क्योंकि ये मुसलसल ये प्रॉब्लम पेश आ रही है कि लोग इसको, स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पायरेंट्स जो हैं, वो इन आउटलाइंस को एग्जामिनेशन की आउटलाइन समझ रहे हैं, जबकि हम हर मीटिंग के अंदर और जो प्रेजेंटर्स हैं उन लोगों ने अपनी अपनी आउटलाइन के ऊपर डिस्क्लेमर्स भी लिखे हुए हैं कि भाई ये एग्जामिनेशन की आउटलाइन नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक मेथड है आपको रिसर्च और जो आपका फैक्ट बुक मटेरियल है वो कन्वे करने का, कि किस तरह से कोई शख्स जो है वो इसके ऊपर आउटलाइन डेवलप करेगा और ऐसे के अंदर क्या मटेरियल लिखेगा। ये आउटलाइन का फाइनल डिजाइन नहीं है, क्योंकि मुझे बेशुमार जगहों से, आई थिंक मोर देन 100 मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि आप क्लासेस में हमेशा कहते हैं कि आउटलाइन के अंदर जो है वो फर्दर पॉइंट्स नहीं लिखने होते, तो यहाँ तो सब लोग लिख रहे हैं। भाई ये वाले लफ्ज भी तो सुने ना। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब मैं वीडियोस का एनालिसिस देखता हूँ, पीपल डोंट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग राइट हियर। वो सीधा यहाँ से जंप करते हैं कि जी ऐसे ये मीटिंग स्टार्ट हुई है, जब पीडीएफ खुलता है ना तो वहां से देखना शुरू करते हैं और फिर इतराज शुरू कर देते हैं कि ये तो इसके अंदर सारा जो है मटेरियल जो है वो दिया हुआ है, तो ये किस तरह की आउटलाइन है, तो ये तो आपका जो है वो तजाद आ रहा है, खुला तजाद आ रहा है और इस तरह की चीजें। तो मैं बार बार, मैं भी और बीच में भी मीटिंग्स के, मैं आउटलाइंस के भी कहते रहता हूं कि दिस इज नॉट एन ए फाइनल एग्जामिनेशन आउटलाइन। फाइनल एग्जामिनेशन आउटलाइन इज 2 स्टेप्स, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ओनली, और ये जो मटेरियल है ये सारे का सारा एसे के अंदर देना होता है। यहाँ पे आप लोगों को कन्वे करने के लिए ये रिसर्च मटेरियल जो है यहाँ पे पेश किया जा रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दिस मटेरियल इज बीइंग प्रेजेंटेड। Without taking much of the time in the beginning, I will hand over the meeting to Osama Sabir. Okay, Osama Sabir, it's over to you. Bismillah. Thank you, sir. The today's topic is, has United Nations succeeded in averting war in the world? I took the stance no, and here is my outline breakdown. I gave the thesis that United Nations has failed in averting war in the world, and the antithesis of this would be that no, United Nations hasn't failed in averting the war, and the synthesis at the end was that there are some positive that United Nations has been working on, but overall, practically, the United Nations has failed in averting the war in the world. I started with the introduction. Since the creation of United Nations, it has sent so many missions for peacekeeping, and through its charters, it tried to prevent war in the world from going into conflicts and wars, but it still failed to do so practically. In the crunch paragraph, overview paragraph, I have explained how United Nations actually failed to avert war in the world, and there are evidences for that. And these are the civil wars in Africa, Middle East wars, like in Yemen, and the global war on terror was one of the examples where foreign army invaded sovereign land, and these are the major example how United Nations failed its primary cause. So why it was its primary cause? Because League of the Nations, as we all know, it was formed and then it failed in because it wasn't
able to, avert the World War II. And that is why everybody sit down together and formed United Nations. The main purpose for United Nations was the global peace and harmony. I'll start with the thesis now. The first point that the argument that I gave for the thesis, and you can see that I will first give the thesis of the first point, and then the antithesis of the second, and then the synthesis. And I will go step by step like this. A point for the thesis. United Nations failed to convince or stop governments from attacking sovereign lands. Primary example for us, and a very recent example, is of Crimean annexation and the Ukraine war. Even under the nose of United Nations couldn't stop Russia from invading a foreign land, which was a sovereign entity. Antithesis of that would be that, there was war, but United Nations, through its peacekeeping role, imposed global sanctions on Russia and started to stop it. And sanctions faced by Russia were globally, accepted by everyone. And that shows how United Nations works for the peacekeeping role of his. And then the synthesis. I guess, Osama, I'm sorry for disturbing you. I guess you will go by mentioning all your thesis first. Okay, sir. And then when you go into the antithesis, first identify the thesis, because like this, I will keep on moving up and down because you have written them separately. This is the examination format. Yeah. Yes, sir. So thesis, first one was obviously failed to convince governments from attacking sovereign lands, right? And the second one now, in green, political hegemony of P5 states, the Security Council states, and their impunity over certain warmongering. That there is a hegemonic role of 5 nations that was obviously there in the formation of UN as well, and they have influence over major decisions taken by United Nations and its Security Council, obviously. And UN has failed to actually held them accountable, these countries, over the years. The example was the unjust Iraq war. Every war is unjust, but Iraq war was one of the instances where a country which was member of the Security Council's permanent member, US, invaded Iraq, and then nobody even talked about. Well, there were talks about it, but UN couldn't hold US accountable to this date. The third argument for the thesis, which is that UN has failed in averting the war in the world, is UN was unable to stop war fundings. And very recent example of that is that according to US State Department, NATO and its allies have committed 13 billion worth military assistance to the Ukraine, the war that is happening in Ukraine. So instead of stopping the fundings, instead of having a mutual peace talks going on, the NATO and its allies are continuously, throwing cash in the fire, and so that is creating chaos, and the war is still going on in Ukraine, and UN has unable to stop this. The fourth argument for the thesis is that UN has failed to avert civil wars, and these civil wars are proxied by foreign hands. And we have examples of Rwanda, Syria, Yemen, and these civil unrests are prime example of UN's failure and peacekeeping role. Although there will be questions that will be addressed in the antithesis, but overall, if we see that, then civil wars are the symbols, are the things that show that UN has failed in its primary cause. The fifth one is obviously the technological advancement of weapons of war, and UN couldn't cap it or maybe just restrict it even, and global military expenditure that we saw rise to all-time high of 21 trillion in 2021, according to the report of SIPRI. So there is no cap whatsoever that UN could even ask the countries to stop doing that, or even have this cap or restricting barrier that nobody can invest more than this limit. But there is no limit for that, and UN cannot do anything on that. Then comes the antithesis. I one by one will explain the antithesis and link it to thesis. The first one is the global sanctions that are imposed, the countries that attack other countries. They're actually
a product of UN's peacekeeping role. As we discussed in our thesis, that war happens and sovereign states are invaded by other countries, but UN instead, implements or puts those countries into global sanctions. And recent examples is of that global sanctions that Russia is facing is actually a product of UN's peacekeeping role. So that shows that UN is doing things to avoid war in the world. The second point is that P5's hegemonic role is countered by UNGA's assemblies resolutions, and they actually pass resolution, and they they question the decisions that P5 takes. And this was actually recently we observed when UN unanimously adopted a resolution and asked P5 to justify the veto power in the future. Next one is the UN cannot intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state. And that is actually a part of UN's Charter, Article 2, Clause 7. This is actually showing that how can UN not stop the fundings, because that has to do with the jurisdictions, and that is actually the country's own domestic jurisdiction, and UN cannot intervene in that, and that is why UN has not been able to do so. Then the fourth argument is the successful peacekeeping missions of UN. The thesis which I gave that UN couldn't actually stop civil wars from happening, but we saw that UN sent 15 missions to this state after Cold War, and 11 of them have actually successfully averted war. They are still ongoing, but they have successfully averted wars. Then the last one, that how UN couldn't stop the technological advancement. The antithesis of that is UN keeps checks and balances on weapons of war. We saw the example, very major example was the DDR process, disarmament, demobilization, rehabilitation, and reintegration process that was done in Africa, throughout Africa. And another one is the United Nations Office of Disarmament Affairs, UNODO. And all these bodies, they keeps in checks and balances how the weapons of war are being used, and if there is disarmament need, and UN actually sends teams there and keeps checks on these countries as well. Although there are positives, but the main purpose is still that although UN is trying to avert wars, but wars are still happening. The major thing, we have to avoid the conflict, right? That's the purpose was UN was created, right? So under the nose of UN, war are still happening. A point, which I first gave the thesis and antithesis on that wars are happening and there are sanctions on the countries. But even after sanctions, the wars are continuously happening. Russia is still aggressing Ukraine, although he is facing major setbacks, but is still invading that country. And wars are continuous in Syria, in Yemen, in Ukraine, even in Kashmir. This is a conflict, right? And conflict is the part where UN has failed to avert that. The second part is that the UNGA resolution that keeps checks and balances on the P5's hegemony, these resolutions can simply be rejected through the veto power. It's like that the resolution that has been sent in the United Nations Assembly against veto power can be rejected by veto power. So that is ironic as well. So overall, in practicality, UN cannot do anything, or cannot jurisdict these P5 members. Then the third argument, that UN did take action of countries that are funding terrorism by international financial regimes. So this argument that UN cannot intervene in countries, personal matters and domestic matters directly, but UN can do that indirectly. It did do so in the past through the TATF, and although they are separate entities, but obviously they are channeled through UN committees and the proposal that UN sends to these committees and control them. So the argument that UN cannot intervene in domestic matters directly can be countered by UN can intervene, and as it did so in funding terrorism cases. Then the D part, peacekeeping missions are post-conflict mechanisms. So we have to understand that peacekeeping missions are only sent with the consent of the main parties to conflict after the conflict.
after the conflict has happened. So there is no method whatsoever to stop the conflict in the first place. And even in the UN Charter, the role that peacekeeping missions first have to get approval of the foreign officers of the both countries, right? So this is the problem, that the main purpose is to avoid conflict from happening, but it happens, and then UN sends its peacekeeping missions. Then the fifth part is the big five are out of these jurisdictions of checks and balances, which obviously links to the thesis that I gave, the wars, the technological development of wars of weapons. And UN cannot keep checks and balances on the P5. How so? Because the Security Council is the primary responsible for checking those peace. It's like when the parties that are maintaining peace go into war, what would happen then? If they are at war with each other, what would happen then? There is no question as well. So these were the synthesis of all the arguments that I've made, and I concluded by that wars always seem just when the mightiest lose. Although war is always done by the mightiest, but in UN's case, the top five have been involved in many cases, especially US and Russia, but there is no jurisdiction, there is no capacity, even in the policy or even in practicality, that UN can stop them. And mainly the reason why UN has failed to avert war is because it cannot intervene, it cannot question these big five who actually created the United Nations. Thank you. Over to you, sir. Thank you very much, Osama. It's a very interesting discussion. The argumentative discussion is always very interesting. How the candidate goes into establishing the case and then establishing the antithesis. I mean, giving the points against his own ideas, and then the synthesis where he rejects the antithesis and defends his thesis once again. Dawood is probably an outsider or somebody who is asking that what is synthesis? Is it way forward? Some of the students who have not yet studied argumentative essay do not understand that the way forward is not given in the argumentative essay. So synthesis is really interesting part, most interesting part of the, for me at least, argumentative essay. It's a very good outline, and you have really done a good discussion. I think now the students will understand, after listening to this and seeing this very good outline, what argumentative essay actually means, what argumentation actually means, and why is it a part of the CSS essay. That how does it shows the breadth of a person's mind and thinking process, that you can present an argument and then you can present the argument against your own arguments, and then you can ultimately counter the arguments that you've given against that. So it's a very interesting process. And the way you have shown that there are, of course, lacunas within the United Nations own working. Very interesting outline. Definitely, Osama Sabir, full marks from my side. And we have enjoyed listening to your argumentation on this. Thank you so much, sir. I would like to mention one thing about this, what we are learning from this discussion, that as far as the United Nations, in my views, in my opinion, at the macro level, I saw it failing. I see it failing. But at the micro level, I see it very successful. For example, micro means that United Nations again has several smaller organizations under its umbrella, which is UNICEF, UNESCO, UNDP, and all these organizations, they are very successful. The way UNDP has worked in Pakistan, or the way UNESCO and UNICEF, the way I see them doing great work throughout the world, and that they are very successful. But when it comes to the macro level organization, and since it has such big contradictions within its own structure, that it does not seem to be. For example, the P5, basically where this topic generated, or it came to my mind from basically this discussion that took place in April, that the UNGA can question the validity of the decisions taken by P5, any of the members of P5. UNGA is capable, it has the. But then again,
P5 has the authority not to agree with any of the P5 vetoes or its actions, or whatever UNGA says or its resolutions. It has the authority not to abide by that. So there are huge contradictions within its structure. I think in 1945, when it was being made, this United Nations, it was the people who made it were cunning enough to leave these loopholes by which they could exploit later on. They could not simply get their hands cut off and give all the powers to United Nations. So they kept those powers to themselves, and in a great political move, they contained the powers within their own hands also, while giving the impression that we are trying to avert war and we are going to work together and live together peacefully as humanity and all that. I would like to mention one more thing about the structure of the argumentative essay. Some of the outlines here are presented in the thesis, antithesis, and synthesis format. The first one that you have seen, Osama Sabir wali, वहां पे आपने देखा कि 5 thesis पहले दिए गए हैं, उसके बाद 5 antithesis दिए गए हैं, उसके बाद 5 synthesis दिए गए हैं. ये एग्जामिनेशन का फॉर्मेट ये है. लेकिन बाद स्टूडेंट्स ने इसको डिफरेंटली भी पेश किया है, जो मैं कहूंगा कि एग्जामिनेशन का फॉर्मेट नहीं है. एग्जामिनेशन में हम 5 पैराग्राफ्स पहले थीसिस के लिखते हैं, फिर एंटीथीसिस के आइडेंटिफाई करके फिर सिंथेसिस के. लेकिन ये जो आउटलाइन आप नेक्स्ट देखेंगे, मैंने मिक्स रखा हुआ है. बाद उनकी सिलेक्ट की हैं जिन्होंने इसने पहले थीसिस का पैराग्राफ दी पॉइंट दिया है, फिर एंटीथीसिस का, सिंथेसिस का. ऐसे लिखते वक्त इस तरह नहीं लिखा जाएगा. आपके सामने प्रेजेंट करते वक्त तो वो अच्छा लगता है कि थीसिस आए, एंटीथीसिस आए, सिंथेसिस आए, लेकिन एग्जामिनेशन में इस तरह लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे लिखेंगे तो ये ट्रांजिशन इतनी ज्यादा है कि वो कंफ्यूजिंग हो जाती है पैराग्राफ्स के दरमियान. यानी यू हैव टू डू द ट्रांजिशन 15 टाइम्स. जबकि दूसरा अगर वाला मेथड रखें कि ऑल 5 ऑल 5 ऑल 5, तो उसमें सिर्फ 2 ट्रांजिशंस हैं. तो इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर जब आप देख रहे हैं नेक्स्ट वाला, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए. नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, एंड शहजादी, इट्स ओवर टू यू. बिस्मिल्लाह. Assalamu alaikum, everyone. Has the United Nations succeeded in averting the war in world? And I have agreed to that all the United Nations has ensured global peace and security after World War II. But however, it has failed in averting wars and genocides in the world due to underlying structural problems. So in the heading B, I will talk about how the United Nations was formed under the San Francisco Conference by the 53 nations, and its founding principle was basically for ensuring peace and international security. Apart from that, it also involved the segments to ensure human rights and to actually avoid their violations in the coming future. So this was the overview, but how has the United Nations not succeeded in averting war in the world? My first thesis says that genocides have been happening around the world in different forms and different segments, in different ethnic or in different nations, but the UN has not done so far that its role was to do so. For instance, different I have mentioned different genocides, but the example that role of UN actually shows that UN peacekeepers were unable to stop the Srebrenica massacre of around 8,000 Bosnian Muslims who actually fled to the UN declared safe zone in 1995. So this shows that how the UN was not being as a safest or safe place for the people even who were running towards it for the safety of their life. But the antithesis says that it was the initial days or world was not very aware of it. So the responsibility to protect principle that is also very known as the R2P. It was basically conducted in 2005 World Summit, and the world decided that it's the responsibility of the nations to actually stop or kind of any future genocide or war crimes in the countries happening around the world. But this I'm going to how it actually in my synthesis part, this actually has been negated, that the UN has described
For instance, the Rohingya is the world's most persecuted people, and it actually has accepted that reality that war crimes or mass rapes or their killings have been happening there, but still they have not utilized it, R2P, against the protection of these civilians against these war crimes. But this R2P doctrine was put test in 2011 and Libyan civil war, and later it was revealed by different leaking institutes that it was just for the regime change of the most powerful nation, and UN actually authorized this uh, kind of an action in the history against under the overt or kind of cover of this R2P. So this has failed, UN has failed in this regard. My second argument is about the right to self-determination, which is, since being UN has, this issue has been evolved on the surface since UN was formed because of the two very big nations. It's about the state nation of the Kashmiris and Palestinians, and UN has failed after the 7 decades to provide them. Rather, they have been subject to the more further kind of war crimes and the genocide particular. So more than 70 years have passed, and there is no self-determination rule for them, or there is no step being taken by the UN in this regard. And still Zionist embrace slogan is being propagated in the Palestine like a land without a people, for a people without a land. So this was something that has also been accepted in Oslo Accords, and they think that the 2018 nation state law which they promulgated was that the exercise of the right of the nation self-determination in the state of Israel is unique to the Jewish people only. So this shows that UN has failed in this regard, but UN antithesis group would argue in that Article 2 of the United Nations Charter is actually about to develop friendly relation among nations based upon respect for principle of equal rights and self-determination of people. So UN do accept this kind of right to the people, but UN also passed different Security Council and resolutions for this right, to their right to self-determination. For example, 47 is for the Kashmir and 181 is for the Palestine, and it's the assembly decided the partition Palestine into 2 states, on one Arab and one Jewish, with Jerusalem placed under a special international regime. So basically, and also one another in 1974, the resolution 3236 also stated that the right of Palestinians to return to their homes and property. So UN does accept such kind of right to self-determination and have gone through a lot for this kind of a step. But my synthesis is again negating that small efforts in the name of these big concepts. And for instance, in Kashmir's kind of a study, we have seen that India has revoked that Article 370 and 35A. They have been doing the gerrymandering in this current delimitation report that they have presented for before the elections, and they have increased the violence. So UN has not use this R2P for this kind of Indian atrocities against the Muslims in Kashmir. And on the other side, flip side, if we see that if we consider the Israel's atrocities, and it's happening the same, and today 85% of the historic Palestine is under that Israel regime, and every day there have been human rights violations have been happening, but the UN has done nothing in this regard. Third is about the status of the veto power that has also been discussed by the earlier presenter. So it's about that they have used it for their own kind of their own interest, and that's the reason that UN has failed to kind of stop such war crimes in different states happening. For instance, US has used this veto power 53 times for Israel only, and the other things are, or the other vetoes are different from that. And same has been done by the other countries that have been doing, like France and Russia and China. So the antithesis states that we do not have kind of the veto power. States actually defend their point with that
that sometimes resolutions are drafted with partiality, so you cannot you have to veto as being the responsible state in this regard. For instance, the US ambassador once said that a grossly one-sided view of what has been taken place in Gaza in recent weeks, and that was very evident to the whole world, but US thinks that it was the partiality or it was the one side of the picture being presented in these resolutions. But the synthesis says that it's about their own foreign policy interest, and thus, for instance, China and Russia has used this veto power in UN Security Council like 14 times to intervene in Syria. Why? Because they think that it's the presently they actually say that it's a misuse of the R2P already in Libya, so that's why UN cannot do such kind of step for this. But for other side, they have been on the side of Assad regime, so they would not let the UN and the US collaboration to be intervening in that region. So this shows that UN has again failed in ensuring that veto power is used for the right reasons and for the right things. And my fourth point is about US. Since the world has been, all the world wars were averted, but a new wave of terrorism has been kind of testing the human capabilities and the UN's capability particularly. So if UN says that we have sent the peacekeeping missions, but they're devoid of kind of dealing with these terrorist organizations in different pockets of the different missions. And for instance, in 2003, the UN offices were targeted by these terrorists. And in the Mali mission, again, their UN peacekeeping operation is devoid of dealing with its asymmetric threats. So this shows that UN is not equipped well to deal with the new upcoming threats in this war category, basically. So antithesis is arguing that now the US has, the UN missions have been conducting the troops from different already kind of foreign fighters from the Afghanistan. They have very specialized analysts and intelligence cells, and they have very trained people for this, and they have been doing well in that. But opposite to that, if we look into that, in Mali the situation is not to the mark, and they have been under constant kind of attack, and we have seen in other times as well that these terrorists do not even identify the UN as a peacekeeping place, and they do attack them. So the frontline role of the UN has been questioned in this way in different parts of the world, that how they have been dealing with it. And the last point is about the nuclear proliferation, that how the UN has been dealing with that. And but this thing has not happened because nuclear threats, for instance, Russia's threat to use that nuclear weapons, and in Ukraine as well as in Asia and other Middle East, that the rising nations basically have been doing this. So UN Secretary General has also accepted this thing, that this UN is not putting, and we have the miscalculation away from the annihilation. So UN antithesis says that they have developed it with the NPT, like 191 members are there, and they have to report back that how much they have been producing their nuclear, and other nations are not going to be do the same. For instance, Iran has been put on halt and other things. But last one is that D3 states nuclear proliferation like India, Pakistan, Korea, and Israel is basically a challenge to the world. For instance, if the recent episode that happened in March by the Indian missile was a test. Certain security experts consider it as a test for the defense capabilities of Pakistan, but the UN has not done so far in that, and have not questioned the India for its weak, but rather Pakistan is always questioned about the things that their nuclear power is in the weak hands. But this was on my side. So UN overall as a whole has failed to do so. That's quite in-depth discussion, Shazadi. You have really gone into the depth of these arguments,
एंड ये दिखाया है कि किस तरह से एक्चुअली हम सिर्फ जनरल बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअल अगर इसके अंदर जाएं ज्यादा गहरा इस आर्गुमेंट के, तो जैसे ये वाला 4B में है कि यूनाइटेड नेशंस एक बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रंट लाइन पे इसके जो मिशंस हैं और इसके जो ऑफिसेज हैं, बाकायदा जिस तरह बगदाद में भी अटैक हुआ और टारगेट किया गया इसको, तो बात जगह पे तो ऐसा लगता है जैसे यूनाइटेड नेशंस बाकायदा वॉर में मुलव्वस है खुद ही, अगर इसके ये माली में ही सारा चीजें ये देखा जाए, अगर ये सारे एक्शंस जो है ये देखे जाए, और जो कि एक्चुअली मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट जो है, it also has thousands of European troops, including large contingents from Germany, the Netherlands, and Sweden, with soldiers experienced in fighting in Afghanistan. तो अब ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की अपनी आर्मी तो नहीं हो सकती, और अगर वो आर्मी हो तो फिर जाहिर है पूरा मकसद ही फोत हो जाता है। लेकिन इसका जो फेलियर की काफी हद तक इसकी जो बड़ी रीजन ये है कि इसको उसी वॉर मशीनरी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, मैं वॉर मशीनरी में कहूंगा, जो एक्चुअल वॉर्स में मुलव्वस है बाकी दुनिया में। सो ये इसकी वीकनेस का एक और बड़ा हमारे सामने एक जो है पॉइंट आता है इसका, कि इसको घूम फिर के वही सारे लोग इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो कि एक्टिव वॉर्स में जो है वो पहले शामिल रह चुके हैं। दूसरा इसका जो ये वाला जो नंबर 2 जो तुम्हारा थीसिस था, द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द कश्मीरीज एंड पैलेस्टीनियन पीपल, इसके ऊपर मोर देन 70 years have passed, और अभी तक जो है वो इसके ऊपर हमें एक भी सब्सटेंशियल या सब्सटेंटिव एक्शन जो है वो इसके ऊपर नजर नहीं आता। थैंक यू वेरी मच शदादी तालिब फॉर दिस वंडरफुल आउटलाइन। एक चीज जो थोड़ी सी मुझे कम महसूस हुई है वो इसके अंदर रेफरेंसेस का है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो एस्पायरेंट्स आमतौर पे ढूंढ रहे होते हैं उसको रेफरेंसेस को भी, तो वो जरा यहाँ पे मुझे जरा थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि उनको भी जो है वो शामिल कर सकें। ठीक सर। Our next presenter is Mariam Javed, and this is the outline, her outline. Mariam Javed, it's over to you. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am going to present the topic, has the United Nations succeeded in averting war in the world? You can see my thesis statement. We'll start from introduction. सबसे पहले we'll discuss, was averting war purpose of United Nations, of creating United Nations जब create की गई तो क्या purpose ये था कि हम war को avert करेंगे या फिर purpose कुछ और था। उसके बाद थर्ड जो मेरा thesis है, that is that United Nation has failed in averting war and containing aggression around the world. ठीक है। My first point was कि मेजर पावर्स जो हैं वो कंट्रोल करती हैं यूनाइटेड नेशंस को इंस्टेड ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो हमारे पास रिसेंट एग्जांपल्स हैं वीटो पावर की, इसमें यूक्रेन रशिया वॉर है। देन जब भी कोई इशू इस तरह से राइज हुआ है वॉर के पर्सपेक्टिव से, वहां पे कोई ना कोई परमानेंट 5 में से वीटो पावर दे देता है और वो इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पाता। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो सैंक्शंस की पॉलिटिक्स चल रही होती है बाय परमानेंट 5 अगेन, that is one thing. Then control UN जो है वो majorly controlled है by US, United States से, which makes it very obvious के major powers like US, Russia, China, they are controlling United Nations rather being controlled by United Nations. Second जो मेरा point है वो ये है कि United Nations failed to come to resolution for a conflict in recent times. हमारे पास यूक्रेन रशिया वॉर के इश्यूज आ जाते हैं, चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, यूएस अफगानिस्तान या इराक वॉर आ जाती है। तो दीज आर द एग्जांपल्स जहां पे यूनाइटेड नेशन हैज फेल्ड मिजरेबली इन कमिंग टू अ रेजोल्यूशन फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड मेरे पास जो पॉइंट है वो ये है कि इनएबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू कंटेन जेनोसाइड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हार्ड पावर। एक जो यूनाइटेड नेशंस में हमेशा जो डिस्कशन चल रही होती है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस डज नॉट हैव एनी हार्ड पावर, या उनके पास कोई आर्मी नहीं है टू कंटेन एनी जेनोसाइड्स। तो उनकी जिसकी वजह से उनकी जो एबिलिटी है वो बड़ी लिमिटेड हो जाती है, और उनकी जो इफेक्टिवली प्रिवेंट करना या रिस्पॉन्ड करना कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो लिमिटेड हो जाता है। एंड दे हैव टू डिपेंड ऑन कंट्रीज जिनके पास हार्ड पावर अबंडेंस में है,
एंड दोज कंट्रीज आर अगेन मेजर पावर्स जो हमारी है, यूएस है, रशिया है, चाइना है। तो अगेन वो जो डिपेंडेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, जो कि इनएबल कर देती है यूनाइटेड नेशंस को कि वो खुद एक्शन ले सके। फोर्थली हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सैंक्शन ऑपरेटर्स है that has been unable to keep peace in the world। आपने सैंक्शन पॉलिटिक्स सुनी है, आपने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लग रही थी न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए उसे, देन वी सॉ कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने का कहा गया, देन वी सॉ कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने का कहा गया और एक्चुअल में लगाई भी गई, लेकिन वो सैंक्शंस एज सच कोई एफिशिएंट प्रूव नहीं हुई, जिसकी वजह से वी आर सेइंग कि यूनाइटेड नेशन का जो सैंक्शन ऑपरेटर्स है वो इनएफिशिएंट हो चुका है और उसकी वजह से नथिंग इज चेंजिंग इन द वर्ल्ड। मेरे पास जो लास्ट पॉइंट है थीसिस का वो है कि यूनाइटेड नेशंस जो है फेल टू कंसोलिडेट पीस। आपको जो यूनाइटेड नेशंस को मेन जो पर्पसेस हैं उसमें जो 3 पर्पसेस हैं उसमें ये डिस्कस हुआ है कि हम लोगों ने किस तरह से पीस को कंसोलिडेट करना है इन द वर्ल्ड, लेकिन वो भी नहीं हो सका। अब इन स्मॉल कंट्रीज लाइक बर्मा, सीरिया, पैलेस्टीन या कश्मीर में भी देखते हैं, दीज आर कंट्रीज जो कि इफेक्ट परमानेंट 5 की बजाय डिफरेंट कंट्रीज से हो रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का कंट्रोल ओवर स्मॉल एंड डेवलपिंग कंट्रीज भी स्टिल क्वेश्चनेबल है एज कंपेयर टू परमानेंट 5। तो वी आर सेइंग दैट यूनाइटेड नेशन हैज completely failed to avert war in different sectors of the world, whether it is developed sector or it is developing sector। जो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट था दैट यूनाइटेड नेशंस में हमारे पास जो मेजर पावर्स जो है वो वीटो पावर के थ्रू या सैंक्शन पॉलिटिक्स के थ्रू हमारी यूनाइटेड नेशंस को कंट्रोल करती हैं। उसका जो एंटीथीसिस है वो ये है कि अप्रैल 2022 में यूनाइटेड नेशन ने एक लैंडमार्क रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी जो वीटो पावर है या आपकी जो किसी भी मैटर पे आप वीटो पावर यूज करके आप उस मैटर को रेजोल्यूशन से रोक देते हैं, उस पे आपको जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशंस का वो उस पे आपको अकाउंटेबल ठहरा सकता है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो कि रिसेंट टाइम्स में आया है, रिसेंट टाइम्स में हुआ है, which will make the use of veto power less और inefficient, जिसमें हमारे पास जो कंट्रोल है वो ज्यादा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस के पास आ जाएगा। जो हमारे पास सेकंड पॉइंट था वो ये था कि हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये वॉर्स हैं जो अराउंड द वर्ल्ड हुई हैं, they were not contained by UN ने मेडिएट करके उसे कंटेन नहीं किया या उसे अवर्ट नहीं किया। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया में जो कि UN की मेडिएशन से खत्म हो गए। हमारे पास पाकिस्तान इंडिया की एग्जांपल है इन द कारगिल वॉर। जब UN ने मेडिएट किया तो UN पाकिस्तान और इंडिया का विद प्रेशर वो रिजॉल्व हो गया, वॉर जो है वो खत्म हो गई। Then we have Liberia, we have Burundi, we have South Korea conflict जो है सूडान में, नेपाल में। ये सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास थ्रू UN mediation conflicts जो हैं वो रिजॉल्व हो गए थे। So we know that some conflicts or many conflicts around the world UN के mediation से end हुए हैं। तो it means that UN has the capacity और capability to end or resolve issues। हमारे पास जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि जेनोसाइड्स जो हैं वो उन्हें कंट्रोल करने में UN जो है has been incapable। तो उसका जो एंटीथीसिस है वो ये है कि हमारी जो यूनाइटेड नेशंस जो है उससे फर्स्ट एवर ट्रीटी लाई टू कम्बैट जेनोसाइड्स। इससे पहले कोई भी जेनोसाइड्स पे काम भी नहीं कर रहा था। जब 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने फर्स्ट एवर ट्रीटी लाई जिसपे 146 स्टेट्स ने साइन किया एंड दे सेड कि दे विल कमिट टू प्रिवेंट एंड punish actions of genocides in the war in peace time as well। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो युगोस्लेविया की हैं, रवांडा की हैं, जहाँ पे ये सारे एक्शंस लिए गए और ऐसे क्राइम्स को की पनिशमेंट्स दी गई और ये शो किया गया कि ऐसे क्राइम्स जो हैं वो लॉन्गर। ठीक है, तो हम लोगों का फोर्थ पॉइंट जो थीसिस में था वो ये था कि यूएस का यूनाइटेड नेशंस का जो सैंक्शन ऑपरेटर्स है वो इनएफिशिएंट हो चुका है। तो हमारा जो फोर्थ एंटी थीसिस का पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे
इवेंट्स आए या ओकेजन्स आए हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस हैव वर्कड और उसने सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको शो किए हैं, जिसमें ईरान का केस आ जाता है, लीबिया का केस आ जाता है, पाकिस्तान का केस आ जाता है, नॉर्थ कोरिया का केस आ जाता है। ईरान में जब न्यूक्लियर पावर बनने से उसे रोका गया तो फॉर सम टाइम ईरान स्टॉप्ड वर्किंग ऑन दैट, और स्टिल वो अभी भी डिस्कशंस चल रही हैं। लीबिया में भी इसी तरह से हुआ। पाकिस्तान में जब हमारे पास कारगिल वॉर का इंसिडेंट आया तो वहां पे उसे प्रेशराइज करके पाकिस्तान को दे आस्क्ड द आर्मी टू कम बैक टू द बॉर्डर्स। उसके बाद नॉर्थ कोरिया का इंसिडेंट है, तो नॉर्थ कोरिया में जो जेनोसाइड्स वगैरह या कुछ चल रहे थे, तो उससे जब प्रेशर डाला गया तो नॉर्थ कोरिया ने भी कुछ एक्शंस लिए सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट एंटीथीसिस का पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास पीस बिल्डिंग के लिए बहुत सारी कमीशंस जो हैं यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं, और हमारे पास यूनाइटेड नेशंस जो है उसने इंटरनेशनल डोनर्स को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को और टॉप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज को दे हैव ब्रॉट इट टुगेदर, और उनके थ्रू उसने बहुत सारी पीस बिल्डिंग और रिकवरी एक्शंस जो हैं वो लिए हैं। यूनाइटेड नेशन का जो पीस बिल्डिंग फंड है वो सपोर्ट करता है 222 कंट्रीज को, 222 प्रोजेक्ट्स को इन 22 कंट्रीज। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग। वी कैन नॉट से कि कंप्लीटली ही इनएफिशिएंट है या कंप्लीटली ही उसने नहीं किया। सो ओके, यस, अब अपनी हमारे मुखातब पास करें हाँ इन्हीं पॉइंट्स की सिंथेसिस। जी हाँ, सिंथेसिस में आपके पास जो एंटीथीसिस पे पॉइंट आया था वो ये था कि आपका जो एक न्यू लैंडमार्क है वो इंट्रोड्यूस हुआ है कि आप वीटो पावर को प्रेसिडेंट जो है वो वीटो कर सकता है या उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकता है। तो पावर जो है वो इट स्टिल रिमेन्स विद द प्रेसिडेंट, एंड दैट प्रेसिडेंट इज फ्रॉम परमानेंट 5, और परमानेंट 5 में से प्रेसिडेंसी जिसके पास, फॉर एग्जांपल जैसे कि यूएस या रशिया मेजोरिटी ऑफ टाइम वीटो कर रहा है, तो अगर आपका यूएस के पास या रशिया के पास आपकी प्रेसिडेंसी है तो वो तो उसे वीटो नहीं करेगा इन एनी केस। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप डेमोक्रेसी लाएं और आप नो वीटो पावर नाइदर टू प्रेसिडेंट दे और नो टू परमानेंट 5 दे। आप डेमोक्रेसी के थ्रू, अगर आपके पास 195 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो आप सबके वोट्स लेके या सबके ओपिनियंस लेके उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लें। एक्सक्यूज मी सेकंड जो बनी यहाँ पे थोड़ा सा, हम इसमें जो आर्गुमेंटेटिव ऐसी होती है इसमें वे फॉरवर्ड इसलिए नहीं देते कि अगर आपका जो सिंथेसिस है वो ये कह रहा है कि आइंदा इस तरह से किया जाना चाहिए, ऐसे करके ये चीज अवॉइड की जा सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटीथीसिस इस वक्त तो ठीक है ना। जरा इसको लॉजिकली देखने की कोशिश कीजिएगा। वे फॉरवर्ड इसलिए नहीं दिया जाता इसके अंदर, जब आपने सिंथेसिस देना है तो सिंथेसिस में आप विद प्रूफ साबित करेंगे कि एंटीथेसिस जब का ये हम वाला वे पॉइंट फॉरवर्ड गलत है। when we जी are here giving way forward, तो हम ये नहीं, प्रूव कर रहे हैं कि वे हमारा फॉरवर्ड नहीं थीसिस देना। का पॉइंट ठीक था। हाँ, वे फॉरवर्ड मैं बता रहा हूँ ना बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि बाद लोग ये पूछते थे कि क्या वे फॉरवर्ड इसमें देना होता है। अगर हम वे फॉरवर्ड देते हैं तो दैट मीन्स कि इस वक्त ये चीज नहीं हो रही, यानी एंटीथेसिस ठीक है। दैट इज व्हाई सिंथेसिस में हम ये साबित ये मतलब इस वक्त तुम्हारा पहला पॉइंट ठीक था, इसमें सोल्यूशन ना दें, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो था हमारा वो ये था कि रेजोल्यूशंस जो हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के वो हमें नजर आते हैं। तो हमने सिंथेसिस में जो सेकंड पॉइंट दिया है कि वो रेजोल्यूशंस जो हुए थे वो लॉन्ग पास्ट से हैं और रेयर इंसिडेंट्स हैं। आपके पास जो लास्ट इंसिडेंट जहाँ पे रिजॉल्व हुआ था, यूएन ने मीडिएट किया था, तो वो 1990s का या 1990s के अराउंड कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जहाँ पे वी सॉ दैट यूएन की मेडिएशन या यूएन की सैंक्शंस या यूएन के किसी भी एक्शन ने वर्क किया था ऑन कंट्रीज। अगर हम रिसेंट पास्ट को देखें तो हमारे पास रिसेंट पास्ट में लास्ट 20 इयर्स में हमारे पास यूएस अफगानिस्तान का इंसिडेंट आ सकता है, इराक के साथ जो यूएस के इश्यूज थे, यूक्रेन रशिया इंसिडेंट है, कश्मीर इशू है, पैलेस्टाइन इशू है, सीरिया का इशू है, यमन का इशू है। So we see that in the last 20 years or in the last 25-30 years, we do not see a lot of resolutions. 90% or more than 90% of the issues or conflicts have not been solved by United Nations. हमारे पास जो सर थर्ड पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने कहा कि
यूनाइटेड नेशंस ने फर्स्ट एवर ट्रीटी जेनोसाइड्स को रिजॉल्व करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए बनाई। तो हम सिंथेसिस में ये कह रहे हैं कि ट्रीटीज जो हैं वो कभी भी रिजॉल्व नहीं कर पाती एनी जेनोसाइड को या किसी भी प्रॉब्लम को, जब तक वो एक्शन में उस चीज को नहीं लाया जाता या उसके एक्शंस शो नहीं किए जाते, तब तक उस ट्रीटी का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ट्रीटी ने किसी भी जेनोसाइड का इन रिसेंट पास्ट, आप बर्मा का इशू ले लें, आप यमन के जो सिविल वॉर्स हो रही थी, आप कश्मीर का इशू ले लें या कहीं पे भी देख लें, तो इस ट्रीटी ने किसी भी कंट्री को बाइंड तो नहीं किया। ऑल्दो वी हैड 146 सिग्नेचर्स फ्रॉम 146 कंट्रीज, लेकिन उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट कोई भी नहीं हुआ। तो वी से कि हम जेनोसाइड्स कंट्रोल नहीं हुए, तो हम इस पॉइंट को भी रिजेक्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो सैंक्शन एफिकेसी है वो 20th सेंचुरी के साथ खत्म हो गई। आपकी जो लीबिया के ऊपर जो यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस लगाए वो 1990 पे लगाई। उसके बाद अब जब देखते हैं, आप ईरान को देखते हैं, तो ईरान ने लो की अपना न्यूक्लियर पावर का जो उसका मिशन था उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है। अभी भी वो डिस्कशंस वगैरह चल रही थी, अगर आप देखें, अगर आपने फॉलो किया तो लास्ट आई थिंक 4-5-6 महीने की बात है कि वो बहुत ज्यादा BBC पे चल रहा था कि कुछ मीडिएशंस हो रही हैं, कुछ रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट डिड नॉट कम टू अ गुड एंड। उसके बाद आप यूक्रेन रशिया की एग्जांपल देख लें, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, रशिया डिड नॉट केयर, उसने केयर भी नहीं की, और वर्ल्ड डिड नॉट केयर आल्सो। जो उसकी गैस सप्लाई थी दैट रिमेन्ड इंटैक्ट। उसके बाद आप कश्मीर का इशू देख लें, कहीं पे भी आप देख लें तो सैंक्शंस की एफिकेसी जो है वो अब खत्म हो चुकी है। अगर आप कहें कि 20th सेंचुरी में कहीं पे आपको सैंक्शंस की एफिकेसी नजर आ रही थी, तो लास्ट 20-25 ईयर्स या 30 ईयर्स का आप डाटा उठाते हैं तो मोर देन 90% ऑफ द टाइम वो आपको नहीं मिलता। आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है कि यूनाइटेड नेशन इज ओनली मेकिंग कमीशन, नॉट डूइंग एनीथिंग रियल। आपके पास जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि आपके पास पीस बिल्डिंग जो इंस्टीट्यूट्स है या फिर पीस बिल्डिंग प्रोग्राम्स है, 222 प्रोग्राम्स इन 22 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किए हैं, तो उसका कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। आप रियलिटी में कुछ नहीं कर रहे, जस्ट आप कमीशंस बना रहे हैं, जस्ट आप एडवाइस कर रहे हैं या एक मेडिएशन इंस्टीट्यूट की तरह काम कर रहे हैं। जब तक आप हार्डली इंटरवीन नहीं करते या आपके पास हार्ड पावर नहीं होती, तो यूनाइटेड नेशन इज एक्चुअली अनएबल टू। अगर आप ये कहें कि यूनाइटेड नेशन कैन डू एंड इट इज नॉट डूइंग, तो जब तक आपकी डिपेंडेंसी ऑन परमानेंट 5 डेवलप्ड कंट्रीज खत्म नहीं होती फॉर हार्ड पावर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो तब तक यूनाइटेड नेशन कैन नॉट avert war at all. And then I will conclude this was my presentation. Okay, thank you very much. Quite a useful discussion. और इसके अंदर जो पॉइंट्स आपने इसके अंदर जो शामिल किए हैं, कुछ हमारे जो इस वक्त मेंबर्स जो लोग who are attending this meeting, there is some research coming from them also. मरियम के जो पॉइंट्स हैं इन्हीं की सपोर्ट में, फॉर एग्जांपल मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर यहाँ पे हमारे पास डेटा होता कि कितनी दफा वीटो जो है वो यूज किया गया है, तो उससे हाबिया ने रिसर्च की और इसने ये प्रेजेंट किया है कि इन टोटल रशिया हैज यूज्ड इट्स वीटो पावर 120 टाइम्स। रशिया इज द मोस्ट, और जिसमें से काफी सारी ज्यादा जो बहुत रिसेंट है यूक्रेन की 120 टाइम्स। US has done it 82 times. अगर आप नोट करना चाहें तो most welcome. Russia 120. US has used the veto power 82 times. UK 29 times. France 16 and China 17 And with most of these veto powers occurring in the past 10 years. एक इसमें important चीज जो दानिश मसूद ने जो चीज ऐड की है वो ये है कि यूके और फ्रांस रिस्ट्रेन कर रहे हैं वीटो पावर को यूज करने में। एंड ड्यूरिंग द लास्ट 30 इयर्स उन्होंने एक दफा भी, ड्यूरिंग द लास्ट 30 इयर्स यूके एंड फ्रांस ने एक दफा भी वीटो पावर जो है वो यूज नहीं की। दूसरा जो पॉइंट है ये वाला मरियम का जो इसका 5E का, इसके लिए करिश्मा जमान का जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि resolution is not binding
and cannot make any country or any nation or any state responsible. ये वही बात है कि हार्ड इंटरवेंशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस के पॉसिबल नहीं है. इट डज नॉट हैव टीथ, और टीथ ना होने की वजह से इट कैन जस्ट सजेस्ट, प्रेजेंट एंड मैक्सिमम जो चीज हमें जो चीज मिलती है, जैसे दानिश मसूद ने मेंशन किया है कि मॉरल जो है उसके ऊपर वो आ जाता है, प्रेशर आ जाता है. दे आर इन मॉरल पोजीशन टू सजेस्ट दिस इनिशिएटिव, दैट्स ऑल. और चनाचे अब ये दुनिया जो है जिस 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 स्टेट पे इस वक्त खड़ी है कि वो उसमें यही हो रहा है बार बार कि क्या कोई कंट्री जब हेजमॉन बनता है तो क्या वो दुनिया का मॉरल प्रेशर जो है वो बर्दाश्त भी करता है या नहीं. और ऑलरेडी हम 2022 से पहले देख रहे हैं राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस अकॉर्डिंग टू दिस. करिश्मा ज़ुबान ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है जी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी हैज आल्सो फेल्ड. और उसमें भी चाइना ने उसकी जो साउथ चाइना सी में उसकी जो आइलैंड बनाना और वो सारा कुछ जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर भी उसकी जो है वो नहीं चल रही किसी किस्म. यस मरियम. सर, आई वुड लाइक टू एड्रेस अ पॉइंट. जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने सबसे पहले जो पर्पसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस या ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस है उसे खोला था, और उसमें 3 जो पर्पसेस थे या ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें पीस कीपिंग या वॉर अवर्टिंग आ रही थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो रिसेंटली जब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म यूनाइटेड नेशंस पे आ रहा था कि यूनाइटेड नेशन इज फेलिंग ड्यू टू कि वो नहीं कर पा रही है, वर्ल्ड वॉर नहीं कर पा रही, कहीं पे भी एफिशिएंसी शो नहीं हो रही, तो यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली इस चीज को निगेट किया कि हमारा काम वॉर को अवर्ट करना नहीं है. दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव. अगर आप यूनाइटेड नेशन के चार्टर को जाके पढ़े तो वहां पे हमने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि हम यूनाइटेड नेशंस जो है इट वाज बिल्ड टू अवर्ट वॉर. तो दिस वाज द रिस्पॉन्स कि हम वॉर को अवर्ट करने के लिए वी हैव नॉट मेड United Nations. And in other sense as well, United Nation is just a mediation institute, and it is quite an efficient mediation institute. आप अगर वॉर के अलावा देखें तो हमारी इकोनॉमिक लिबरेशंस जो हैं या हमारी वर्ल्ड में जो कनेक्टिविटी है या मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशन एज एन इंस्टीट्यूट हैज बीन सक्सेसफुल. जो मैंने कल रिसर्च किया, ऑल्दो आई थॉट डिफरेंटली बिफोर, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो टॉपिक था ना जस्ट अवर्टिंग वॉर का, उसके अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन इज अ फेलियर. लेकिन यूनाइटेड नेशन हैज बीन अ वेरी एफिशिएंट इंस्टीट्यूट क्योंकि बहुत ब्रॉड पर्पस इंस्टीट्यूट है. आप सारे कंट्रीज को कवर कर रहे हो, आपका मेंबरशिप ओपन है, ब्रॉड पर्पस है, यू आर कवरिंग ऑल द. जब आप बहुत सारे पर्पसेस को एक साथ कवर करते हैं ना तो आपकी एफिशिएंसी इन एवरी पर्पस लैक्स. ठीक है, आप हर एक चीज को वो नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. तो जब ये टॉपिक बनाया, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, उस वक्त ये चीज मैं बिल्कुल मेरे माइंड में एग्जैक्टली मैं इसी के ऊपर प्ले करना चाह रहा था. इट्स गुड दैट यू हैव पॉइंटेड आउट कि यूनाइटेड नेशन इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ मैकेनिज्म टू अवॉइड वॉर. उसकी इतनी उसके अंदर हार्ड पावर जो है वो नहीं उसको दी गई. यही इसके अंदर दिलचस्प चीज थी और अभी तक कोई इस पॉइंट को नहीं था पॉइंट आउट कर सका. इट्स गुड दैट यू हैव डन दिस कि एग्जैक्टली ये पर्पस नहीं था इसका. इस टॉपिक को बनाने का मकसद ही ये था कि आप समझे हैं इस चीज को कि नहीं. थैंक यू सो मच. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अबाउट यूनाइटेड नेशंस. और साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर जो आ रहा है इसका आर्गुमेंटेटिव एसे का, ये बहुत से लोगों के लिए एक नई चीज होगी, पहली दफा आपके सामने. दिस इज द एक्चुअल आर्गुमेंटेटिव एसे स्ट्रक्चर फॉर दी CSS एसे. ये है वो वाला स्ट्रक्चर जिसके जरिए हमारे स्टूडेंट जो है 50+ 60+ मार्क्स लेते हैं. जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था वो ये वाला है जो हेगेलियन डायलेक्टिक के ऊपर जो है वो चलता है. ये नहीं कि आप ज्यादा थीसिस दे दें और फिर थोड़े से एंटी थीसिस दे रहे हो और थोड़े से मिला के सिंथेसिस दे दें या उन दोनों को मिला के फिर लोग जब फेल होते हैं तो फिर वो बुरा भला कहते हैं FPSC को. वो एरिस्टोटलियन मेथड जो है वो यूज कर रहे होते हैं और एरिस्टोटलियन मेथड शायद बहस के अंदर यूज हो सकता हो लेकिन ऐसे राइटिंग के अंदर जो है वो यूज नहीं हो सकता. सो दैट इज वाई यहाँ पे एक बड़ा लॉजिकल आपने देखा आर्गुमेंटेशन जो है वो होगी. और ये हेगल का जो मेथड है कि थीसिस हैज एन एंटीथीसिस एंड एवरी थीसिस एंड एंटीथीसिस आर स्पेसिफिक टू ईच अदर. और फिर उसके बाद जो सिंथेसिस है वो रिजेक्ट्स द एंटीथीसिस एंड सपोर्ट्स द थीसिस.
सिंथेसिस का ये काम नहीं है कि वो मिला दे दोनों पॉइंट्स को, जो कि नेचुरल हो ही नहीं सकता नेचुरली। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम पेश आ रही है, वो जो 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 स्ट्रक्चर आमतौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में यूज किया जा रहा है कि 7-8 पॉइंट्स थीसिस के दे लो और कोई से 4 एंटी थीसिस दे लो। भाई ये किस तरह का एंटी थीसिस है जो उस थीसिस से नहीं मिलता? समझ आ रही ना आपको? रूल नंबर 1 that every thesis has an antithesis. Rule number 2, every thesis and antithesis are specific to each other. और अगर वो स्पेसिफिक टू ईच अदर हैं तो फिर ये किस तरह के थीसिस है कि जिसके अंदर आपने पॉइंट्स थीसिस के कुछ और है, एंटीथीसिस कुछ और कह रहा है और सिंथेसिस कुछ और कह रहा है। पास हो जाती है इस तरह की भी चीज, लेकिन वो 40-41 नंबर लेके, एंड दैट्स ऑल। बट इफ यू वांट टू एक्सेल, मैं बार बार आपको कहता हूं कि मेरी जो प्रॉब्लम है और मेरे जो दूसरे जो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जो आइडेंटिफाई करते हैं, हम देखते हैं कि दिस इज अ कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन। हम यहां सिर्फ पास होने के लिए नहीं आए, हम मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए आए हैं। ये कंपटीशन है। दैट इज व्हाई वो मेथड सीखें जिससे आपने कॉम्पीट करना है और ज्यादा मार्क्स लेने हैं। ये नहीं कि सिर्फ बस हाजिरी लगवा के बस 40 नंबर लेके पास होके तो चलें जी सीएसएस पास तो हो गया, चाहे एलोकेशन नहीं हुई या चाहे किसी लोअर किसी उसके अंदर ग्रुप के अंदर हुई है। So try to understand the value of the argumentative essay and what it actually is.